तो इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह मैं इन सब मौज़ूआत पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात करना चाहता हूँ। सर आज वोटिंग होगी? डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन द असेंबली। अच्छा खान साहब आज क्या एक्सपेक्टेड है असेंबली में शिरकत, इजलास में शिरकत करें? इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाउस के माहौल पर मुनहसर है कि अदम एतमाद। Comment coming in very telling over there, saying that it depends on what happens inside the house, whether there will be a voting or not. Now what we're learning is that Imran Khan's party so perhaps Imran Khan's party is likely to defy the Supreme Court, and what we are learning right now is that it is missing in the Pakistan Assembly. So I'm going to go across to Abhishek on this one. Abhishek, you know, we've been talking about this as to how they've been trying to dodge this vote, and yet again, as the opposition numbers are swelling, we understand there are 177 MNAs inside. What we see right now is that Imran Khan's party is still missing. Well, Nupur, you know, these are Pakistani media reports, in fact, quoting Fawad Chaudhry, who is the Information Broadcasting Minister of the Imran Khan government, and he has been quoted as saying that the Imran Khan government might delay the voting. Now, this cannot happen, or whatever understanding we have gathered over the last few days closely monitoring Pakistan developments, this cannot happen on two counts. One, because the National Assembly rules or the rules of business of the Pakistani Parliament clearly say that once a vote of no confidence or the motion of no confidence is admitted as per procedure, then within 7 days voting has to take place. Also, the Supreme Court judgment in overturning the Deputy Speaker ruling has clearly said that the vote of no confidence has to happen as per the procedures of the Parliament. So I think so far as actual voting goes and taking the no confidence vote goes, Imran Khan government has no options. Absolutely. And Abhishek, you know, earlier we were... All right. So we are getting pictures from Pakistan viewers and these are of the National Assembly. इस वक्त आप एक मिनटों में कौमी असम्बली के अंदर के ये मनाजिर देख सकते हैं जहां पर ऑपोजिशन के अरकान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ अरकान अभी भी लॉबी में मौजूद हैं। पीटीआई के 22 मुनहरिफ अरकान भी पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब आप ये बिल्कुल ये मुनहरिफ अरकान की है, बिल्कुल ये पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के साथ पीटीआई के जो 22 मुनहरिफ अरकान हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच, अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले के मनाजिर जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त अब से कुछ देर पहले के मनाजिर में शहबाज शरीफ जब वो अपने चैम्बर में दाखिल हो रहे थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। ये कुछ तकरार का एक वाक़या हुआ था, जो ये सार्जेंट से इनसे कुछ बहस हो गई थी। ये गेस्ट लॉबी की एंट्रेंस है, यहाँ से जब एंटर होने के लिए कुछ अफराद ने कोशिश की तो उनको यहाँ पर मौजूद सार्जेंट थे, उन्होंने रोक दिया था, जो उनको हॉल में दाखिल नहीं होने दिया गया था। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास था वो ख़त्म हो चुका है और अब 177 अरकान जो मुत्तहिदा अपोजिशन के हैं, इसके अलावा 22 पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो भी अब हॉल में एंटर होना अब फ़र्दन शुरू हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अब से कुछ देर पहले के मनाजिर जब वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचे और सहाफ़ियों के सवालों का मुख्तसरन जवाब भी दिया। बड़ी तादाद में अपोजिशन अरकान इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 8 मिनट रह गए हैं कि जब